Good afternoon, everyone. Nidhi ma'am, you may start the session. Okay, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. Am I audible to all? Good afternoon, everyone. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Okay. So, dear learners, today we will talk about what were the different economic reforms. Okay, block 3 states about this. Yes, we are here for business environment. Yes or no, learners? Am I audible? Yeah, we can hear you. मैम यू आर ऑडिबल मैम. Yes. स्टूडेंट्स कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. Yes. कहाँ है ये सब? हमें लग रहा है स्क्रीन ऑफ करके खाली बैठ गए हैं. Yes. Student, dear learners, reply. For which subject we are here? मैम अदिति हैज रिप्लाइड. यस मैम. Yes, I have seen. So we are now going to talk about the economic reforms. Anyone, what were the economic reforms? I think WTO. I think that today the audience is not responsive. Okay, I should continue the session. So, what were the economic reforms? Basically, the term economic reforms broadly indicate necessarily structural adjustment to external events. Now, what were the need of economic reforms? Economic reforms लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1947 में हमें फ्रीडम मिल गया था. Till 1977, Congress government ruled the country. After that, audience, please respond. This is not the way. I can't teach like this. Yes, no, some answers. Yes, Learners, ma'am. yes. Don't respond in chat because I can't concentrate on chats. Okay. So, what was the need of economic reforms? 1947, we got freedom. Then, till 1977, Congress government ruled us. After that, Janata Party came into being and win election. अब प्रॉब्लम क्या हुई? जो भी गवर्नमेंट, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, वो क्या करती है? दे स्टार्ट गिविंग अस फ्री. यस, फ्री में Ye- इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में फूड, फ्री में कुछ भी फ्री में देना स्टार्ट कर देते हैं. वो फ्री में देने से प्रॉब्लम कहाँ क्यों आती है? वाई देर इज अ प्रॉब्लम? फ्री में देने में प्रॉब्लम क्या है? फ्री में देना तो अच्छी बात है ना, कुछ भी फ्री में मिलता है तो. Ma'am, because the governments are giving free from the tax money, and now Yes. now that money will get reduced. So other stuff which required budgeting, that has to be get adjusted. यस, सो वो फ्री में देना प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है क्योंकि फ्री तो हम दे रहे हैं, बट वो फ्री कहाँ से गवर्नमेंट दे रही है? फ्रॉम द टैक्स, फ्रॉम द रेवेन्यूज दैट आर जनरेटेड. यस, और बाद में फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होती है. सो फिर क्या हुआ कि इन 1991 जब हमारे पास सिर्फ 15 डेज का फाइनेंस लेफ्ट था, ओनली 15 डेज ऑफ फाइनेंस वाज लेफ्ट विद अस. सो हम फॉरेन कंट्री से कुछ बाय नहीं कर सकते थे. अभी हमारे घर में या हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ओनली 15 डेज का फंड है, उसके बाद फूडिंग, लिविंग, हर चीज का प्रॉब्लम है.
तो क्या करेंगे? कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। उस समय क्या था, वो देर आर टू टाइप्स ऑफ लोन दैट वी टेक, वन इज वी टेक फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, everyone know about this, world bank, and other from IMF. What is IMF? International Monetary Funds. why what is the difference between world bank and IMF? हम किस केस में वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं और किस केस में IMF से लोन लेते हैं? एनीवन? मैडम IMF जब लोन देता है तो उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं यस, जिसको पूरा करना पड़ता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हम डेवलपमेंट के लिए लोन लेते हैं। वो हमेशा कोई नया स्मार्ट सिटी डेवलप करना है, कोई नया हॉस्पिटल डेवलप करना है, कोई यूनिवर्सिटी वो करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है, तो वर्ल्ड बैंक लोन हमेशा डेवलपमेंट के लिए देता है। बट जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, जब आपका दिख रहा है कि आपकी कंट्री डिक्लाइन फेज पे है, तो वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेते हैं, तब वो नहीं देते हैं। IMF गिव्स लोन, और IMF जब भी लोन देता है तो उनके बहुत सारे क्लॉज होते हैं, और वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी उनका हाई होता है, टाइम पीरियड भी लेस होता है। तो क्या हुआ कि IMF was ready to give the loans, but उनका क्या क्लॉज था? You should go for LPG. What is that LPG? Liquid petroleum gas. Ma'am, private, I forgot the name. उनका ये था कि आप फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस होने दीजिए, लेट देम कम एंड start doing their business in India. Okay. So at that time, this LPG came. LPG is what? Liberalization, privatization, and globalization. Now back to the PPT. Visible? PPT is visible? Yes, ma'am. Yes. So it includes the functions of the country spending to the level parallel to its income and thereby reducing fiscal deficit. What is fiscal deficit? Fiscal policies क्या होती हैं? Total export minus total import. Fiscal policies. देखो, फिजिकल पॉलिसीज बेसिकली होती क्या है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी मतलब बेसिकली इनइक्वालिटी का रिडक्शन, टैक्सेशन सिस्टम, मोबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, हर चीज को मैनेज करने के लिए वी फ्रेम फिजिकल पॉलिसी. वी नॉट, वी हु, गवर्नमेंट फ्रेम्स द फिजिकल पॉलिसीज. ओके, व्हाट इट? Okay. Yes. So what is fiscal deficit? Yeah, the difference between total revenue and total expenditure. ठीक है? Yes, So ma'am. it Yes, ma'am. required gradual reduction in import, obviously import में reduction, और increase in export. These adjustment also required market change in order to make economy flexible. Obviously अगर export increase करना था और import reduce करना था, तो हमें इकोनॉमी में चेंजेस, मार्केट स्ट्रक्चर में चेंजेस करने थे. दिस इज व्हाट द क्राइसिस ऑफ जून 1991, which climaxed in 1991. The crisis compelled the government to adopt the new path-breaking economic policy, under which a series of economic reform measures were initiated, with the objective to deal with the crisis and to take the economy to the high growth path. This was all about I explained you in my story. Now, need of economic reform. What were the need? Increase of fiscal deficit. Yes. किसमें इंक्रीज करेंगे फिजिकल डेफिसिट में? It is a difference between total revenue and total expenditure. Yes or no? ये एक्चुअली में फिजिकल डेफिसिट हमारी बोरोइंग की कंडीशन शो करता है, टोटल बोरोइंग. ओके, तो हमें बोरो करना था ना. Then increase in adverse balance of payment. Balance of payment क्या था? क्या होता है? What is balance of payment? BOP.
Anyone? No one has the idea what is BOP? Balance of payment. Students. मैडम बता दीजिए एक बार। हाँ, जो भी मनी कंपनी में फ्लो कर रही है, डिफरेंस बिटवीन ऑल मनी फ्लोइंग इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, ठीक है। एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी उसी टाइम में, एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनफ्लो और आउटफ्लो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी मनी कंट्री में फ्लो कर रही है, और आउटफ्लो ऑफ मनी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, किसी भी चीज का, किसी भी पेमेंट का बैलेंस क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हमारा कैसा होगा तब कैसे बैलेंस होगा? नो आइडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारी वेल्थ को मेजर करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर प्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली, अगर हम दोनों अगर बराबर होगा तो क्या होगा? अगर हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक इक्वल स्टेबल कंडीशन पे होंगे। पर अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें तो क्या होगा? हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी? हाँ। यस, यस और नो? यस मैम। ऑब्वियसली ना, आपकी सैलरी ज्यादा आ रही है और आप खर्चे कम कर रहे हो तो सेविंग्स कर पाओगे ना ज्यादा? हाँ, ज्यादा हो गई सेविंग। यस। फिर यस गल्फ मैम। क्राइसिस, गल्फ क्राइसिस किसी को आइडिया है व्हाट वाज द गल्फ क्राइसिस? The learners are today in, what was Gulf crisis? Before 1991 there was a war between US, yes, यस मैम। and Iraq. That was the Gulf crisis. Obviously Russia Ukraine war, that came with some crisis or not? यस मैम। Similarly Gulf crisis came, there was a war between US and Iraq. Then fall of foreign exchange reserve. Obviously अगर प्राइस फॉरेन एक्सचेंजेस के प्राइस में फॉल होता है तो वो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए ही नीडेड था. देन राइज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस पुअर थी, इस वजह से देयर वाज इशू ऑफ. अच्छा, हमने 1991 में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड. LPG was introduced in 1991. Why not in 1947? जब हम freedom, when we were free at that time, why didn't it was introduced? Why not LPG introduced at that time? Anyone can answer me. Can think over this part. मैम बिकॉज उस समय नीड नहीं था एंड वी डोंट नीडेड IMF लोन्स. हाँ, नीड नहीं था. क्यों? हम तो तब भी प्रॉब्लम में, तो हम तब भी थे. 1947 में क्या फाइनेंशियल कंडीशन हमारी सही थी? बट अगर वी तभी हम लोन ले लिए होते, हम इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दिए होते अपनी कंट्री में, तो शायद हम 1991 तक क्राइसिस में जाते ही नहीं. मैम IMF की टर्म्स नहीं मीट होते ना लोन के लिए. एनीवन? बेसिकली क्या होता, अगर हम तब लोन लेते तो हम आईएमएफ से लोन तो ले लेते, लोन हमें मिल जाता, बट हमारे पास फ्रॉम 1947 टू 1991 बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वी हैव लर्न. हमारी आर्मी ने भी कुछ वॉर फेस किए, प्रॉब्लम्स फेस की. हमारे जो वर्कर्स थे वो भी कुछ टेक्निकल हुए. देवर मेनी 5 years प्लान आल्सो केम इनटू बीइंग. उससे भी काफी चीजें हुई. yes or यस. no? यस 12 मैम. 5-year plans are there na. So those 5-year plans made some changes in the country, in country's economic condition. Economic condition में भले changes ना किए हों, but experiences always makes us something learn. Yes. सो यस. अगर हम उस समय एलपीजी कर देते तो फॉरेन कंट्रीज तो हमारी कंट्री में आ जाती, बट प्रॉब्लम क्या होती कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थे, उनका होलसेल कंट्रोल होता. प्लस
जब एलपीजी में क्या था, 49% स्टेक ऑफ द फॉरेन कंपनी एंड 51% स्टेक ऑफ द इंडियन कंपनी. यस. So at that time we were not in situation to take a stake of 51%. ओके. Yes, तो ma'am. अगर उस टाइम हमारे एलपीजी इंट्रोड्यूस हो जाता तो हम जहां थे मतलब जहां पहुंच के अपने आप को ओवरकम किए हैं एलपीजी इंट्रोडक्शन से, हम ओवरकम ना कर पाते, हम और बैक में चले जाते. So that's why it was not introduced in 1947, it was introduced in 1991. और with the introduction of LPG क्या हुआ कि different company came into being. जैसे any example? Hero, Honda, Maruti Suzuki, these were the examples of this LPG schemes. Yes, economic reforms, LPG economic reforms. Okay, ma'am. Stake of Hero was 51% and Honda was 49%. Similarly, Maruti 51, Suzuki 49%. जो बाद में चेंजेस हुए हैं एफडीआई में, तभी तो ये कंपनी ब्रेक होके दे स्टूड अलोन, बिकॉज तब ये इशू नहीं था कि कोई 49% कोई 51% ऐसा कुछ. सो दैट इज द रीजन व्हाई these economic reforms affected. Now these ये भी वही, this is the story that I was telling. These are the economic reforms: liberalization, privatization and globalization. Now what it means to free the economy from direct or physical controls imposed by the government. Liberalization, obviously liberal होना, to be a bit liberal, एकदम, not to be too much strict, to impose any rules. So to free the economy from direct or physical controls imposed by the government. Prior to 1991, government has imposed several types of control on Indian economy. Example, industrial licensing system, price control or financial control on goods, import license, foreign exchange control, restriction LPG आई तब भी थे. जैसे पेट्रोलियम में no one could come, in railways no one could come, okay, in armed forces no one could come. These were the restrictions at that time through that were imposed through IMF. IMF के सामने there was some कहते हैं कि हमने भी अपनी कुछ शर्तें रखी कि हम ये शर्त पे ही सारी चीजों को फॉलो कर पाएंगे, ये रिफॉर्म्स ला पाएंगे. So these control leads to fall in the economic growth. Economic reforms were based on the assumption that market forces could guide the economy in a more effective manner than government control. It was the assumption that market forces could guide economy in a more effective manner than the government can control. So what were the measures taken for liberalization? Abolition of industrial licensing and registration. According to new industrial policy, with the expansion of 6 sectors, industrial licensing has been removed. Concession from the MRTP Act, freedom from expansion and production to industry. These were the measure taken for liberalization. Then increase in investment limit of the small industry. It has been raised to rupees 1 crore and investment limit raised to rupees 25 crores, 25 lakhs. These were the increase in the investment. Then freedom from import capital goods, freedom to import technology, ये सारे freedom दिए गए. Action plan for IT and software development, which are at a boom nowadays. Now, what was privatization? Privatization means allowing the private sector to set up more and more of industry that were previously reserved for public sector. Privatization, everyone is clear with what is privatization. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So, more and more of industry, किसी भी इंडस्ट्री को प्रॉपर वर्क करने के लिए अगर गवर्नमेंट को लग रहा था कि दे वर नॉट एबल टू हैंडल इट, दे आर
yeah, they're not able to earn more profit, then it is moved toward private sector. Yes, change in ownership. Degree of privatization judged by the extent of ownership transferred from public to private sector. Ownership change से ही degree of privatization की वैल्यू पता लगती थी. Now what were the advantage? Reduction in economic burden. How come? Economic burden में privatization कैसे advantage दिया? मैम गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, मतलब Yes. इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. हाँ, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. प्राइवेट कंपनीज आएंगी, दे विल इन्वेस्ट, दे विल वर्क इन दैट अकॉर्डेंस की मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करें. टाइम टेकिंग नहीं होंगे प्रोजेक्ट्स, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. ऑब्वियसली द वर्किंग स्टाफ, दैट the manpower will be monitored, they will work more efficiently under private sectors. Okay, reduction in sense of government की जो इररिस्पॉन्सिबल था, जो सेंस था एम्प्लॉइज का या जो वो था, उसमें रिडक्शन होगा. दे विल बिकम मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल. देन व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? What is scientific management? Principles of management. Anyone have idea? PPM. There are two management way of Ma'am, management. ma'am, scientific management and art. Administrative management. Who gave administrative and who gave scientific? FW टेलर मैम. Yes. Scientific or administrative? साइंटिफिक है. Yes. So what does scientific management says? Management is kind of a science. Break the process in parts and then work on it too, so that it could be done in more and more efficient way. यही तो बोलता है science. Yes, ma'am. Do it, test it, then redo it. So break the process in parts and do it in more and more efficient way. So ये भी था. Private sectors किसी भी काम को कैसे करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी काम को कैसे कर रहा है. तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट भी एक एडवांटेज था कि ठीक है, अ स्टाफ, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं. इन गवर्नमेंट सेक्टर इफ अ पर्सन इज रिक्रूटेड, ही और शी इज रिक्रूटेड, efficiency को monitor up to that mark. In private sector it is not monitored up to that level. Yes, agreed everyone or not? Yes ma'am. Yes, but efficiency matters in private sector. So that was the thing. Then reduction in political. Obviously if a company is going under private hands, privatization, then political interference is also not there. Reduction will be there. Then encouragement of new inventions, new techniques, new invention, new technologies will be indulged to achieve. Then now what were the objectives? To increase efficiency and competitive power of the enterprise, to strengthen industrial management. Efficiency increase karna, competitive power, obviously many market players are there, so everyone will try to be more efficient to be at the topmost position in the market. To strengthen industrial management, that is but obvious. To earn more and more foreign currency, this is also the main motive. To make optimum use of resources, this is the basic motive of each and every organization. To make optimum use, minimum input, maximum output. Yes. Yes ma'am. To achieve rapid industrial development of the country, this was the objective of privatization. Now disadvantage: lack of social welfare. What does this mean? प्राइवेट कंपनियां मैडम सोशल वेलफेयर का ध्यान कम रखती है, जैसे गवर्नमेंट Yes. कंपनी रहेगी Now, तो. हाँ, now CSR activities are introduced, but एक उस समय जो था प्रॉब्लम कि यस, वो सोशल वेलफेयर को उतना कंसीडर नहीं करती हैं. क्लास स्ट्रगल, व्हाट डज दिस मीन हियर? class 1, class 2, class 3.
Everyone is सब familiar with this class. सब लेवल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो वो स्ट्रगल कहाँ हुआ फिर? The people at a lower class will not earn that much benefit than the people working at the higher class. Yes, यस मैम। yes. So class struggle, because in private sector nothing, increment is also not at equivalent basis. Increase in inequality, if there is class struggle there is inequality. Increase in unemployment, hiring and fire, layoff, everything will be done. Exploitation of weaker section, this is also, people will be ready to work on low wage, so they will be recruited to do, or नेक्स्ट डे या आफ्टर फ्यू डेज उनसे भी कोई लो पे मिल गया तो उसको फायर आउट कर दिया जाएगा. दिस इज द रीजन इन प्राइवेट सेक्टर. यस. यस मैम। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट मतलब अपना स्टेक कम करती है यहाँ पे यस, कंपनी में, गवर्नमेंट किसी अपना कंपनी। स्टेक कम करती है, या तो वो स्टेक कम करती है और या तो मैनेजमेंट का टोटल ट्रांसफर दे देती है. यस. यस मैम। एक होता है कि 49% रह के रहेंगे और एक होता है 51% रह के रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, और एक होता है किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. नाउ ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट. जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को लगता है कि जो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है या जिसमें वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उनके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को भी उन्हें सैलरी देनी है, सब कुछ करना है, वहां से उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो उसको वो, जैसे हम कहते नहीं है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सेमी गवर्नमेंट. यू ऑल केम टू हियर अबाउट, सबको पता होगा इस वर्ड्स के बारे में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. Yes, नाउ ma'am. टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसेस, ऑब्वियसली अर्निंग तो इम्प्रूव करनी ही है. टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन, कंपटीशन भी और मार्केट डिसिप्लिन को भी इंट्रोड्यूस करना है. टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली दिस इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ, बिकॉज अगर कोई और मैनेजमेंट आ रहा है या कोई और उसको लुक ओवर कर रहा है तो वो अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. एंड टू इंकरेज वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कि ओनरशिप का वाइडर शेयर इंकरेज करने के लिए. नाउ रीजंस, फिस्कल डेफिसिट वन इज द बेसिक रीजन. एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली किसी भी फर्म का या तो उसको एक्सपैंड करना, उसकी और ब्रांचेस खोलना, या उसको डाइवर्सिफाई करना किसी और फील्ड में, किसी और प्रोडक्ट में. डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपेंशन. फेमिलियर with both these words? Both are different or both are similar? डिफरेंट. How come? एक्सपांशन मैडम जिस फील्ड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी में एक्सपांड करना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब दूसरे नए Yes. नए एरिया में Very good. एक्सपांड। Very good. Now, to repayment of government debts. गवर्नमेंट के डेब्ट्स, ऑब्वियसली लोन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उनको रीपे करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान एंड पीएसयूज गिव नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल. जब पब्लिक सेक्टर यूनिट नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न देती है कैपिटल पे, तो दिस आर द रीजन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. नाउ बैकग्राउंड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, Indian economy has virtually impressed bankruptcy during the period of this story I have told you about कि इस period में एकदम Indian economy was going down. Then 236 public sectors undertaking and only 123 were profit making. The top 20 profit making PSUs were responsible for 80% profits. So the return of public sector investment was just over 2%. Only 2% return was there. So now what was the criteria? कौन से criteria पे disinvestment हुए? Whether the objective of the company are achieved, first criteria ये देखा गया. Whether there is decrease in number of beneficiaries, जो लोग जो those who are beneficiaries उनके नंबर में डिक्रीज हुआ. देन ऑल्सो
whether serving the national interest will be affected because of disinvestment. ये भी चेकआउट किया गया कि नेशनल इंटरेस्ट विल बी अफेक्टेड अगर सर्विंग द नेशनल इंटरेस्ट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. डिसीजन लेने के टाइम में इन चीजों पे बहुत ज्यादा कंसिडरेशन की गई. देन वेदर प्राइवेट सेक्टर कैन इफेक्टिवली ऑपरेट, उस अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर सकता है कि नहीं. ना ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न टारगेटेड कुड नॉट बी पॉसिबल टू अचीव एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स lost its purpose. ये सारे क्राइटेरिया थे. Now what were the process? The government initiated the disinvestment new economic policy के through उन्होंने किया. These were the committees who look after the disinvestment process, and both the committees has recommended disinvestment to fulfill objective of modernization of the PSEs through रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए इनिशिएट डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन, रिटेनिंग एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. या तो रिटेन करना और नहीं तो री एम्प्लॉय करना जिनको एक्सपेल कर दिया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है. फंडिंग जेन्युइन नीड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड मिटिगेटिंग फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. These were the criteria process. Now these committees also distinguish between the short term and long term goal of दो criteria रखा इन्होंने, short term और long term for disinvestment. And कोई भी लॉन्ग टर्म गोल को सैक्रिफाइस नहीं करना था शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए. नाउ देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी government has announced so mitigate the physical deficit, and the crucial shift in government policy for disinvestment of PSUs was mainly attributed to poor performance of these enterprises. These were poor performing enterprises and they were burden for the government, so that was the reason for disinvestment. Further, in 1996 5-member public sector disinvestment commission was made, and these report 58 enterprise out of 70 enterprises referred to it by the government recommendation range from strategic sales in various proportion to disinvestment at various level. This committee was ultimately abolished 1999 में abolished हो गई. Now new department of disinvestment 1991 में. In 2001, the government reconstituted the Disinvestment Commission with R.H. Patil as its chairman, and non-strategic PSUs, their subsidiaries, excluding Indian Oil Corporation, ONGC, GAIL, ये सारे को exclude किया गया. So, privatization and disinvestment में क्या है? Privatization ownership का change देता है और disinvestment ओनरशिप का चेंज नहीं देता है, डाइल्यूट करने की बात करता है शेयर को. यस, या मैनेजमेंट चेंज की बात करता है. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. नाउ मैम एक डाउट था, जो आप शुरू के स्लाइड में एक बताया था ना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की नीड क्यों पड़ी, तो उसमें लिखा था कि इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट लिखा, जबकि हमारा टारगेट तो मतलब होता है डिक्रीज करने का ना. फिस्कल डेफिसिट को ना, हाँ, हमारा टारगेट हमेशा डिक्रीज करने का ना, लेकिन उस समय इंक्रीज करने का टारगेट क्यों था? एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट स्लाइड में जो आपने बताया था ना शुरू में, जब नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में. नहीं, वो हमारा टारगेट नहीं था इंक्रीज करना. फिस्कल नीड, फिजिकल डेफिसिट का इंक्रीज हुआ था तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड आई. ओके, इट वाज नॉट द टारगेट. ओके, ठीक मैम, समझ. Now let's come to our last block. Is what about? Have you watched the seen the syllabus? क्या है syllabus? No idea. No one. The last block is about international business environment. Now, what is international business environment? ना, बिजनेस एनवायरनमेंट तो हम लोग बहुत अभी तक पढ़ लिए, सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के ही बारे में बात किया गया. What is international business environment?
ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन यही तो था, और क्या था? Yes or no? Yes, ma'am. So, screen is visible. Yes, ma'am. Buying and selling of goods and services across the border. That is international business. So, the national border are crossed by the enterprise to expand their business activities like manufacturing, mining, construction. All are these sectors where we cross the national border. Trade means exchange of goods and services for satisfaction of human wants. Then, obviously, ट्रेड जैसे कोई भी एक एग्जांपल बताओ आप लोग मुझे इंटरनेशनल बिजनेस का, एनी वन एग्जांपल. Petroleum, we buy, we sell, right? Mostly we buy. हाँ हाँ, we buy mostly we buy petroleum. Okay, but let's take some lively example. MACD available at each and every place in the country. Is it an Indian company? McDonald, MACD, what do you call? Is it Indian? Foreign franchisee. Foreign franchisee? Yes. So, जो उनका प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, जो वो जिस तरीके से प्रोडक्ट के इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, इज दिस सेम फॉर एवरी कंट्री? Yeah, absolutely. You can say most of the time, because that's what their brand, right? Yeah, but sometimes they change, na? They change according, like the Chinese food, it's not similar. No. I'm talking about Enough. the content of the particular item, right? So Yeah. yeah, the menu is changed, but not the content of particular item. Yeah, Menu the will be changed. menu will change according to the customer. Now in international business, I am talking about the technological, these what micro and macro, जो हमने first class में बात करी थी, micro and macro environment. Now see, in international business also we have both these environment, micro and macro. Yes or no? Yeah, we have there. Yes, we have now. So MACD is changing the menu, changing the way the changing the selling ability, advertisement. Not all advertisement are same for each and every country. Other thing in international business, like selling product or like JioMart. पहले हमारे पास बिग बाजार था, now it's changed to JioMart or Smart Bazaar. Yes. Now, opening a Zara store is more fruitful, or working more on this JioMart is more fruitful? What do you suggest? So if you talk about the geomod perspective, like this is the Indian brand, and uh, like no doubt that will government will help a lot, right, in all the Yes. terms and conditions, right? So Yes. it's good to explore more in the geomod, found the multiple opportunity, multiple places in multiple domain, right, rather than allowing other foreign such stakeholders to come to the Yes. India, and But you know but foreign stakeholders we are working on FDI. We are allowing more and more stakeholders. yeah, जो but make sure the current scenario will not impact, right? Suppose you bought the foreign stakeholder and your geomart is gone, they are yeah, not able to provide proper it may be the compensation and all, right? my So perspective yeah. is कि customer of JioMart and customer of Zara are same. No, ma'am. No, No, that is not correct. no. Profit earning is where more? In GeoMart, I would In say. JioMart or in Zara? Where there is more profit? My profit. Designing a dress from Sabyasachi and designing a dress from a boutique near your house. Who will be more costly? I'm No the doubt big brand have big you know uh,
this purchasing price, because there are multiple channels, This Zara will be more costlier, na? Yep. Yeah. That is but obvious. Product of JioMart or product of V-Mart. Let's take the example of V-Mart. That won't be that much costly, na? But ma'am, that profit will also depend on the number of sales, right? Yes. So where we will go, where we are going to earn more profit? Ma'am, that depends on the economic condition of the people who can buy. Like everyone might not be buying Zara, but a lot of people will go in JioMart and they make some purchases. But just have a look over the status of the status of the profit earning of Zara and JioMart. Matlab Hmm. just after the class, don't and do have a look over the profit earning of both the units. Don't compare JioMart. Just take VMart, okay, not JioMart, because Yeah. when you will relate JioMart, you will go with the stake of Ambani's. VMart and Zara, whose profit is more? Profit of Zara would So be you more. are talking about unit profit, right? Yeah. Like for the particular unit item, who are the getting more profit? Like it's not like the overall profit, नहीं because मैं you don't ओवरऑल know. प्रॉफिट Yeah. की बात कर रही हूँ Unit profit, पर्टिकुलर. no doubt, the big giants have more profit, Yes, because yes, they the big don't giants. spend much as we spent on them. बट व्हेन वी गो इन द जेनेसिस वी सी कि देखिए सिंपल बात है लर्नर्स. वी मार्ट के प्रोडक्ट्स कौन खरीदता है और जारा के प्रोडक्ट्स के लिए तो प्रीमियम कस्टमर्स है ना. फॉर जारा दे आर नॉट कि एवरीवन इज रेडी टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ जारा. प्रीमियम कस्टमर्स आर देयर ना. बट दोस प्रीमियम कस्टमर हैज the PPP that we were talking about, that is high with them. A customer, अब मैं इसको कैसे बता रही हूँ, ये इंटरनेशनल बिजनेस में हम बात कर रहे हैं पूरी. वी मार्ट का जो प्रोडक्ट है जो कस्टमर बाय कर रहा है, सिंपल थिंग है. कोई कोई पर्सन गया, ही बाइज अ शर्ट, 2 or 3 shirts, and a person buys a shirt from Zara or या a outfit from Zara, a person buys an outfit from Zara. तो जो वी मार्ट से शर्ट बाय कर रहा है वो उसको कितनी बार पहन रहा है? The number of times he or she is wearing that. Yeah, that is in daily use, so multiple times they are putting on. हाँ, multiple time. And the other customer of this premium brand, this luxury brand, That is occasional, man. occasional, 1 or 2 maximum. Yes, just giving an example. So that is why they are earning more profit. Got the concept? Yes or no? Nothing. No one is saying anything. समझ में आया कि नहीं? मैम लास्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा. लास्ट पॉइंट ये था कि जो जारा का कस्टमर है वो कितनी बार एक अटायर को वियर कर रहा है, या जो सब्यसाची से डिजाइन कराया हुआ लहंगा है उसे कितनी बार पहना गया, और जो एक दिल्ली में जाके सरोजनी नगर मार्केट से जो लहंगा खरीदा गया वो कितनी बार पहना गया. मैम जो दिल्ली मार्केट से होगा वो ज्यादा पहना यूज. जाएगा. सब्यसाची से डिजाइन कराया गया या जारा से जो आउटफिट खरीदा गया वो एक बार पहना गया. हाँ. सेम पर्सन को, क्योंकि वो एक प्रीमियम क्लास का कस्टमर है, उसको जब दोबारा वियर करना होगा वो उसे नहीं वियर करेगा. ही वोंट बी और शी वोंट बी कैरिंग दैट आउटफिट. यस. यस तो सर. बाइंग प्रोसेस उसका ज्यादा होगा ना, परचेजिंग प्रोसेस. यस. तो प्रॉफिट अर्निंग उनका इसीलिए ज्यादा है. बट मैम अगर अगर मैं बोलूँ ज़ारा या एक जो भी है ब्रांड्स, ये तो इंटरनेशनली ज़्यादा एक्सपैंड होंगे हाँ. कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, राइट? हाँ. तो जब एक्सपैंड ज़्यादा है तो इनका प्रॉफिट इस वजह से भी तो ज़्यादा होगा ना. हाँ, तो बात वो आपकी सही है कि एक्सपैंड ज्यादा है, बट एक्सपैंड होने पे भी इनके कस्टमर्स तो वही है ना, प्रीमियम कस्टमर्स ही तो हैं. हाँ ठीक है. नॉर्मल हर एवरीवन इज नॉट गोइंग टू कि हमारा मतलब एनीवन क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इज गोइंग टू बाय एंड वेयर अटायर आउटफिट ऑफ जारा. ऐसा नहीं है ना.
नहीं हुई। Abhinav, you can understand in that sense. Suppose there is limit of some item for the particular, brand. Like 100 item आप sell कर सकते हैं maximum, right? Yes, So Hmm. what happened? Like now you got the answer, right? Jara will be most profitable yes. because Okay. there is limit of 100 items. So when you talk the profit, then you must talk about the some range, some unit, some Yes, some. Yes, scope. yes. Got it. Okay, so that is the in this way international. So this example I was giving just कि expansion international market में expansion की वजह से how profit earning increase, how business increase, expansion, diversification, these are the points. Okay, domestic business और international business का difference, currencies but obvious, difference in natural and geographical condition, that is also there, mobility of factors of production, then imposition of tariffs, custom duties on imports and export, quantitative restriction, exchange control, imposition of more local taxes, and different legal system. These are the differences because legal system domestic के लिए different होते हैं, international business के लिए different होते हैं. Now, what is the importance of international business environment? Obviously, it helps in expansion. We have talked about the example, helps in managing product life cycle. What is product life cycle? Anyone? From inception phase to manufacturing to selling, even deprecating, again incepting, some usable. Introduction, then Yeah. maturity. Introduction, growth, Introduction, growth, mature, maturity, and decline. These are the decline. phase. So how it helps? Product life cycle is helped in international business. How? Any idea? Anyone? No. मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर किसी कंट्री में आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे चला गया है तो यू कैन परस्यू टू द अदर कंट्री एंड यू कैन अगेन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फेज. ओके, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ये तो पता है ना कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. So it helps in managing product life cycle. Technological advantage, but obvious technological advantages are gained in international business, then new business opportunities, n number of customers, proper use of resources, minimum maximum utilization of resources, then availability of quality products. How come availability of quality products? Everyone of you must be knowing कि जो हम इंडिया में मैंगो खाते हैं और जो मैंगो एक्सपोर्ट होते हैं उनमें डिफरेंस होता है. जो एप्पल हम इंडिया में खाते हैं और जो एप्पल एक्सपोर्ट होते हैं उनमें डिफरेंस होता है. यस और नो? Yes, अग्री? ma'am. सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली जब हम इंपोर्ट करेंगे तो कोई भी चीज गुड क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी. कि एक्सपोर्ट करेंगे तो So, ma'am, you mean to say we are not having good quality products here? no, I am not meaning this to say we No, are no, not no. having. I got a point. Just explain this. Okay, I'm not saying, but the best qualities are exported. If you visit Kashmir, you will get the views of the people who are No, no. growing Again, apple there. again, you have to explain this again. Again, you are saying best quality we export. So, Yeah, what do you mean? The lowest quality or the lowest to best quality we use? lowest to best. We use, huh? Yeah, Okay. Actually, that is also available here, basically, but different class, different price and all, madam. Like uh, same thing you can use here also. It's not like ki best quality always exported. no, no. I'm not saying कि availability is there, but it's not available for all.
Yeah, agree. Again, the price factor is there. Okay, it's Agree, not agree. available for all. So we are in abundance, but it's not accessible by all. Now, what are the problems in international business? Controlling the market. Obviously, the market is very big. Exhausting natural resources. How natural resources are exhausted? जहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में होगा वहां पे वो करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, वहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, दे विल यूज मोर एंड मोर ऑफ इट. जैसे हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, इट्स कॉस्टिंग लेस, so that's why it's a hub for BPOs and KPO, our country. Yes or Yes, no? ma'am. Manpower is yes. Now, importance to luxuries, those areas where margin of profit is high. Zara is the example. Now, problem in international business: trade practices, economic development, shifting of investment. These are the problems. Now, there are some theories in international trade. The theory of mercantilism. Anyone who have idea about these theories? We are just short of time. I will just explain these theories to you all. Okay, now theory of mercantilism is the oldest theory, or this theory says that maximum export and minimum import, and this was done in terms of gold. Uh, the export import was done in terms of gold, and wealth was measured in terms of gold only. Now, the second theory was absolute advantage theory. This was given by Adam Smith in 1976, and here export what is more, जो भी आपके पास abundance में है उसको आप export करो, और जो आपके पास कम है उसको आप इंपोर्ट करो. इंपोर्ट द अदर. अगर आपके पास लेबर ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, उसको एक्सपोर्ट करो, और जिस चीज का जो चीज लेस है उसको इंपोर्ट करो. एडम स्मिथ या एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गेव दिस कॉन्सेप्ट. देन द थर्ड थ्योरी वाज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंगल कंट्री की बात करते हैं. वी कंपेयर टू प्रोडक्ट्स. ओके, यहाँ पे हम सिंगल कंट्री में टू, अगर हमारे पास व्हीट ज्यादा है और राइस हमारे पास कम है, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, इन कंपैरेटिव एडवांटेज, जिससे हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा. वी कंपेयर द एडवांटेज एंड देन अकॉर्डिंगली ट्रेड इन इंटरनेशनल बिजनेस. So we compare the product of single country only. Then there is a theory of factor endowment theory. Two factor label and capital are considered in that theory. Okay. So thank you.